Good morning. We discussed in the previous video that the standalone system and its type. In this video we discuss about grid connected. There are two types of the solar cell power plant, basically standalone system where the different types of the plant, singles power plant, standalone system with AC load, standalone system with battery and storage hybrid system. But in the grid connected system, we discuss how it works. In the grid connected system, the power generated by the PV array is fed to the grid. At the time of excess power generation, the requirement of the load is supplied to a commercial grid. It means that at several times we know that when the power comes to the grid, that is more than it is supplied to the commercial grid when the excess power generation. Next is the output power from the inverter has to satisfy the norms of the quality of the electrical standard so that it can match the grid system. So output from the inverter has to satisfy the norms of the quality of the electrical standard system. This is the layout of grid connected system. First, PV array. When the energy comes, then a inverter which converts the DC load, and this distribution panel which convert the DC load into the AC load, and the electrical utilities to be obtained. So the grid system of the electrical energy of the electrical system that can be explained by this layout. PV array is connected to the inverter power system, then this is distribution panel, this is vice versa electrical unit. The distribution comes when electrical unit is more than a transfer for the commercial, and this DC load is converted into the AC load. This is grid connected system. Next topic related in the photovoltaic cell, that is the solar cell technology. Solar cell technology, there are the various terms that are basically used into the calculation of the solar radiation energy. So different formulas that are used. So first one is the solar cell efficiency. Solar cell efficiency is equal to the Bm into Im upon इंसिडेंट इंटेंसिटी इनटू एरिया. Vm जो है मैक्सिमम वोल्टेज है, Im इज़ द मैक्सिमम करंट, एंड इंसिडेंट इंटेंसिटी जब भी सन की रेज सोलर प्लेट पे आती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि जब पीक आवर होता है इट मीन्स दैट ज़्यादा जब हीट होती है सन से तो उस टाइम इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. जब हीट का टेम्परेचर कम होता है, सन का टेम्परेचर, तो उससे हीट की इंटेंसिटी जो है वो कम मिलती है. सो ईटा इज इक्वल टू FF इंटू VOC इंटू ISC अपॉन टोटल इंसुलेशन इंटू द फॉर्म ऑफ fill factor. FF is a fill factor, VOC is the open circuit voltage, and ISC is the short circuit current. So another formula in terms of the open circuit voltage and short circuit voltage. Next is the quantum efficiency. Quantum efficiency को हम लोग QE से इंडिकेट करते हैं. Eta QE is equal to number of electrons holes pairs generated per meter area to the number of photon striking the device. So we know the quantum energy, that the number of electron holes pairs generated per unit area to the number of photon striking the device. क्वांटम एनर्जी का प्रिंसिपल भी हमने फिज़िक्स में पढ़ा है कि कितनी तेज़ी से जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि आप क्वांटम एनर्जी इफ़िशियंसी. फिन फैक्टर से पहले दैट इज़ द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सिविटी, इसको हम SR बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन फ्लक्स जो कि Q से इंडिकेट करते हैं डिवाइडेड बाय फोटॉन एनर्जी. तो स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्सिविटी जो होती है इट इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लक्स टू द फोटॉन एनर्जी, Q अपॉन फोटॉन एनर्जी. फोटॉन एनर्जी को HC अपॉन लेमडा कहते हैं. तो दैट फार्मूला इज इक्वल टू Q इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई HC. दिस इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सिविटी. नेक्स्ट इज द फिन फैक्टर. फिन फैक्टर को FF से इंडिकेट करते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द सेल
to power obtained with product of short circuit current. Fin factor FF is equal to PM upon ISC into VOC, where PM is the maximum power and ISC is the short circuit current and VOC is the short circuit voltage. It varies between 0.6 to 0.8 for the silicon. So fin factor, that is ratio of maximum power to the power obtained with product of short circuit current. Next is the factor affecting efficiency of the solar cell. So there are various type of the factors which affect the solar cell efficiency. पहला जो है that is the reflection loss at the top of the surface. जो surface है surface plate की, उस पर reflection loss होता है क्योंकि बार बार रेज आती हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो surface plate है उससे reflection की जो वैल्यूज़ हैं, जो रिफ्लेक्शंस का टाइम है वो कम हो जाता है. सेकेंड इज़ द शेडिंग ड्यू टू द चार्ज कलेक्शन ग्रिड. शेडिंग फिनोमिना का क्योंकि चार्ज कलेक्शन ग्रिड पे ज़्यादा होता है. थर्ड इज़ द इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द लिमिटेड सेल थिकनेस. बहुत ज़्यादा एनर्जी बार बार एब्जॉर्ब करते करते क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत पतली होती है, तो सारी की सारी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ इन्वायरमेंट में चली जाती है. और फोर्थ इज़ द collection losses. So these are the various type of the factors which influence the efficiency of solar cell. Next is the advantage and disadvantages of the photovoltaic system. We know that the solar energy is converted the electrical energy into the main device, that is the photovoltaic cell. So there are various advantages of the photovoltaic cell. First is the it provides clean form of energy, so it is environment friendly. जनरली हम जैसा देखते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में जितना भी एनर्जी हमें ऑब्टेन्ड होता है, जो भी सिस्टम हम फॉलो करते हैं, उसमें बहुत तरीके से ह्यूमन हैजार्डस की फिनोमिना होती है. कोल बर्न होता है, बर्न के साथ बहुत सारे हमें फ्लेम्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं और उसके थ्रू स्मोक जो है वो इन्वायरमेंट में जाता है, जो कि ह्यूमन हैजार्डस है. बट सोलर एनर्जी में सोलर के थ्रू जो भी रेज मिलती है, दैट आर नो एनी hazardous phenomena occurs by the solar energy. Second is the direct electricity way of generation. It means that there are no transportation phenomena occurs that the sun rays direct come onto the surface of the plate. There are no method that how the rays comes on the surface. It is a natural process, so it is a very important advantage of the PV system. Third is the no mechanical moving parts no mechanical moving parts, so less maintenance required. जनरली हम देखते हैं कि मैकेनिकल कंपोनेंट्स जितने भी हैं, टरबाइन हैं, ब्लेड्स हैं, ये बार बार मूव होते हुए देयर आर सम wear and tear must be there. So after some time that the maintenance phenomena must be required. But in the PV system there are no maintenance phenomena is to be required. Third, last one is the smart energy networks with distributed power generation. It means that it is a very smart network system by which there are no human hazardous phenomena occurs, no transportation phenomena occurs, no moving parts, so less maintenance is required. So according to this way, we can say that this is the smart energy network. Rather that there are some disadvantages of the PV system, either solar energy system, that is the solar panel efficiencies level are relatively low, 30% compared to the other relevant renewable energy. यहाँ से जो efficiency हमें मिलती है सोलर से वो 30% नियर अबाउट मिलती है, and this is as compared to other renewable energy. Second one is the solar power is variable energy source with energy production depend upon the sun सोलर फैसिलिटीज़ में प्रोड्यूस. जनरली हम लोग देखते हैं कि जो भी हमें सोलर से एनर्जी मिलती है वो एनर्जी एक टाइम ड्यूरेशन के पीरियड में ही मिलती है. जैसे दिन का जो टाइम है, जब भी सन से रेज मिलती हैं, दैट इज़ इन बिटवीन द एवरेज टाइम दैट इज़ 10 to 12 आवर. सो इन दिस पीरियड वी ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द सन. मैक्सिमम एनर्जी पीरियड from 8 am up to the 6 pm. So in between
up to 10 to 12 hour, we only a limited time period by which we store the energy. So this is the two disadvantages, but however we make a system and the maximum energy that is to be utilized by the solar cell, that is to be obtained in some research areas into the field of solar cell and solar energy radiation calculations, so that minimum losses to be occurred. Thank you.